All right, welcome back. I've had a little time in the break to give it a little taste test. Appa, it was amazing and delicious. Yes. And simple, a quick one, so you can try it at home. Definitely. All right, we'll move on to our guest. If they had a taste test, did you guys try? मेरा खाना कर लेते हैं. Yeah, कर लें, करके बताएं कैसा है. Smells good, great, as you know. I think पूरा one guest is waiting, her hand cannot go there. Please. Very bad. Help her. Thank you. It's too good, honestly. Honestly? It's tender, it's Nice. yum, and it's too good. MashaAllah. Thank you very much. And no marination, no too many ingredients. Easy. Garmi mein वैसे भी you should put less masalas. So do try it because you got what they said. So it's nice and simple, and I think everybody should try it, because go for simple things so that you're not in the kitchen for a long time, because the one who cooks has to be on the table with the people, with the family, with the guests. So I think you had a chance to taste it. How was it? I'll tell you. Yeah. I'll tell you because they took a second serving and a third one. That means Exactly. अगर We ये can't hold ourselves. Yeah. It's too good. बहुत अच्छा. yes, Nice. so Simple I got and it. delicious. Right. Exactly. So you have to try it because it was simple, nice. And what is the feedback you were giving? It was It's tender, juicy, soft, and there is a layer like crispy, crunchy, and yeah. inside Right. of this, like it's soft and That- moist. it has to be soft from inside. Exactly. Otherwise, यही होती है. हाँ, अगर liver is dry, kaleji is dry, nobody will want to eat it. So the main tip of this is, what is the tip? Now I'll ask you. क्या था जो मैंने सबसे पहले बताया था? What was the tip? Tip was that कि इसको अच्छे से वो वॉश करना है और पैन हॉट होना चाहिए. हाँ, that is the That is tip. the key. The pan should be very hot. If your pan is cold, the liver, the kaleji will just leave water. It should be very hot. वो grilling का taste देता है. Exactly, That and is- it's look And like. don't cook it too long क्योंकि उससे फिर tough हो जाएगा. अच्छा, है ना, one thing आपा? आपा Yeah. I just mentioned because आपने बहुत yummy बनाया है. आपने grill नहीं किया. You serve it in grill pan, but आपका वो जो एक heat temperature था ना, हाँ. उससे ऐसा ही इसका taste आ रहा है कि you grill it. इसलिए because I did not heat it, that pan. ये जो आपका sizzler होता है ना, Exactly. sizzler के अंदर तो आप सर्व करते हैं, you heat the sizzler Exactly. ताकि if your steak or something stays hot. वो sound. हाँ, अगर मैं इसको heat करती the sizzler, then it would become dry, overcooked हो जाता. And another tip was put salt last when you serve, Yes. removing it. Oh yes. Because if you So you put don't salt, lose the salt moisture. will leave water. Yes. And when the salt, then फिर उसमें से पानी आएगा, cook it again, वो tough. And even we can't judge it कि वो last में salt डाला है. वो एक ऊपर सी नहीं है. अंदर उसके salt Very है. simple. Even salt के लिए आपा यूं भी होता है ना कि चिकन है और गोश्त में भी हम बिल्कुल आखिर में मैं add भी करते आखिर में हैं. डालती हाँ, हूँ. कि दाल में भी आखिर में कुछ फिर दाल गलती नहीं if you put it in the beginning. So there are little tips which you should remember. Definitely. And then your food turns out good and simple and short of time. As you are. Thank As you. always. Thank you. Nice. बेटा आपको कैसा लगा? आप तो बोली नहीं कुछ. It was What was good. your feedback? It was really good. नहीं, you're saying what they said. No, it was You actually mean good. it? चलो, that's good. Don't cheat Jazakallah. us. Take your own words. Because you're sitting far off, these two will finish the whole thing. You will not get anything. Exactly. नहीं, चलो, Jazakallah for Plus liking us. it. Acha, so this was amazing kaleji as it was simple. Just tell me a little bit about how you do Eid at your place. Oh. Yeah. As you know, it's a blessing for me because we are engaged so many things. और I am very family oriented person. Like मुझे बहुत पसंद है बिला वजह की वो अपने ऊपर लेना आ जाओ बनाते हैं तो I design my table menu planning and there is a things like आपा बताएंगे बहुत कि पेपर वर्क होता है मेन्यू प्लानिंग होती है what you gonna buy it कि क्या क्या है उसको किस तरह से हमने करना है अरेंजमेंट क्या है because in मतलब in our Eid like there is a something वो जो एक स्पेशल हमारा होता है एक ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं शीर कोरमा एंड ऑल दैट तो अम्मी इज़ डूइंग हर जॉब बट हमारा थोड़ा सा एक अलग होता है कि ये चीज़ें भी होनी चाहिए क्योंकि एक तो ग्रैंड टेबल लगता है वो सुबह का नाश्ता होता तो है yes. फिर उसके अलावा देयर इज समथिंग मतलब कुछ खाने के अलावा हो तो आई एम गोना डू दैट थिंग्स मंचिंग के लिए और वो ऐसी Or some चीज drinks to cool Exactly. you down. Yes. Exactly.
summers, yes, तो drinks. ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं तो पेपर वर्क करती हूँ बिफोर ईद कि वो क्या मैं बनाऊंगी और मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बना के, एग्जैक्टली और मैं उस पेपर से चलती हूँ तो मुझे मेस नहीं होता इन द लास्ट मोमेंट यू आर नॉट गोइंग टू पैनिक योरसेल्फ कि अच्छा ये है If ये you नहीं plan है। it, then you go in the right direction. तो और वो- लाइक आप उसको वो भी कर दें कि कि काम बांट दें कि हाँ, कि सब exactly. अपने ऊपर ना लें क्योंकि हमारे लेकिन यहाँ किचन का normally- काम कोई नहीं लेता। लेकिन पता है लेकिन आई थिंक कि करना चाहिए अम्मियों को कि बताना हाँ, पड़ता है कि बिल्कुल, बेटा आपने ये कुछ ना करना है, कुछ आपने ये करके करना है। somehow involve करें Mother कि जो जो लोग होती है बच ना, के भाग रहे हैं it's ना the they are mother. somehow It's always the mother who's Yes. there, who takes and she आखिर never में, minds. yes. एग्जैक्ट अच्छा यहाँ पे वो अम्मियों का आपकी बात से मुझे याद आया कि वाकई माय मदर यूज्ड टू बी लाइक कि वो देर क्यों की पूछने में और सर्विंग करने में देर क्यों की व्हाट यू गाइस डूइंग लाइक वो उनको होता है मेहमान आए एंड Foreign. एंड वो एक बैकअप प्लान से होता है कि आपने ठीक है अगर ये टाइम इस चीज़ का नहीं है तो यू हैव टू डू समथिंग Yes. एल्स तो ये सारी चीज़ें जो है मतलब मेरे घर में तो बहुत वो टाइम ज़्यादा तो नहीं लगा अच्छा मैं इधर उधर तो नहीं थी कौन आया है तो मतलब अम्मी ने सारा काम किया हुआ होता है बहुत से घरों में लोग सोते रहते हैं. That is the worst thing. exactly. Exactly. बहुत प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम. फिर आपको बहुत टाइम है क्योंकि सोने इसके का. ये तमाम काम जो आप कर रहे हैं ना ये आप सवाब आपको मिल रहा है. और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, डोंट कीप द बेस्ट पार्ट ऑफ द मीट फॉर योर सेल्फ. yes प्लीज इट शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू एवरीबडी. कि आपने रानें रख ली और आपने वट एवर आई डोंट नो इक्वली उसको मैं हमारे मिक्सिंग घर उसको में पूरी कर लेना हाँ चाहिए. आप रान भी नहीं बनाए ना आप सबका गोश्त Total ताकि जो है mix सबको करना है. इक्वली बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमारा दीन सिखाता है. इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वल बेस्ट पार्ट्स शुड गो टू द पुअर बिकॉज आप तो खाते रहते हैं जी. आप क्या करती हो? आप अम्मी को हेल्प करती हो? जी आपको ये तो नहीं कहती स्मेल आ रही है मैं अम्मी किचन में नहीं आ रही? नहीं कभी 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 हाँ सच बोलना चाहिए ना. बट यू शुड है ना वंस इन अ व्हाइल यू शुड स्लिप आउट बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू शुड हेल्प हर बिकॉज शी विल फील अल्लाह भी खुश होगा एंड अल्लाह खुशी के बाद फिर माँ योर मदर विल बी हैप्पी दैट माई डॉटर इज हेल्पिंग मी. एंड आई थिंक आज का जो है ये बहुत लंबा नहीं हो गया. तो दीज आर लिटिल लिटिल थिंग आई थिंक सब लोग समझ जाएं. पहले से कुरान पढ़ें मायने पढ़ें. think with your sit with your elders and then when you sit with them जो आपको बड़े समझाते हैं ना हमारे बड़ों ने जो समझाया था आज तक हम वो फॉलो कर रहे हैं. so that's why we know what is happening. so now it's our duty to teach you all ताकि you are on the right direction. Thank you. It's a blessing. We have guys like you. Means you are a complete institute for us. True. So Allah bless you both of you. Like आपा मुझे एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये करना था कि मीट जब हम गाय का और बकरे का फ्रिज में रख लेते हैं लॉक बैग के साथ और उसमें चिट भी डाल लेते हैं रिटर्न भी होता है बट आफ्टर फ्यू डेज वो रिमूव हो जाता है. few days or few months. Don't keep it for that long in your fridge. नहीं वो चिट भी मिस हो जाती हैं. नहीं आप Sometime- उसको जो मार्कर आता है permanent या जो marker से, परमानेंट yes. मार्कर से आप okay. उसके लिख लो एंड डोंट कीप दिस मीट कुर्बानी For की too फॉर long, टू yeah. लॉन्ग. जितना लोगों को आप बांट सकें फिर आप तो खरीद के खा सकते हैं मगर डोंट कीप इट कि वो मिट जाए. सो जल्दी कुक इट एंड आई थिंक टुडेज शो का Fresh टाइम till ओवर now. टाइम सबा हो गया हमारा. alright Yes. So, बहुत ज़बरदस्त, very delicious episode this was. Clearly, we had nice session. Yes, of learning also. All right. So, we had amazing recipe by Naheed Appa that was absolutely delicious yet simple. You can try it at your homes and then definitely give us feedback through feedback@ikra.tv and info@ikra.tv. Also, you can catch up the episode on YouTube through Ikra TV official's page. And sure, please let us know your comments and your feedback. Thank you. To make instant kaleji. Wash kaleji properly and then strain it. Cut it into small bits, then add oil to a pan. When the oil is hot enough to fry, put kaleji in a pan and just give it a stir and cool it on high heat. When the oil is hot enough to fry, put kaleji in a pan and just give it a stir. Cool it on high heat and then put kalonji on it. When kaleji starts to leave water, add crushed black pepper and cook until it becomes dry. Then add in salt and lemon juice and dish it out after giving it a nice stir and serve hot.